Hello, welcome to my video once again. This is ServiceNow tutorial part 2 डिसीजन टेबल। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसीजन टेबल जो मैंने लास्ट टाइम किया था वो तो फ्लो से रन किया था मैंने, बट मैं आपको बताऊंगा कि अब उसको स्क्रिप्ट से कैसे रन करें। मीन्स लेट्स से यू हैव क्रिएटेड डिसीजन टेबल, योर रिक्वायरमेंट इज टू कॉल दैट डिसीजन टेबल फ्रॉम सर्वर साइड स्क्रिप्ट एंड नॉट टू इम्बेड दैट डिसीजन टेबल टू योर फ्लो डिजाइनर। लेट्स सी, मैंने कुछ यहाँ पर ओपन किया नहीं है। लेट मी ओपन वन बाय वन फ्लो डिज़ाइनर। सो मैं आपको उसी कैटलॉग आइटम में दिखाऊंगा, द कैटलॉग आइटम विच आई हैव प्रीवियसली क्रिएटेड। लेट इट ओपन, इट्स टेक सम टाइम and yeah, service portal we need. So what we will do, we'll create one field based on the groups, we will print the output. So एक फील्ड लेंगे हम जो स्ट्रिंग फील्ड बनाएंगे अपने कैटलॉग आइटम में। आई थिंक मैंने ऑलरेडी वो क्रिएट कर रखा है। एंड ये रहा हमारा डिसीजन टेबल। या इट वाज टेस्ट डिसीजन फ्लो टू। ओके, या आई थिंक मैंने फील्ड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फील्ड, जस्ट वी नीड टू टेस्ट दिस। सो लेट्स से I will first test this in background script for you how it will work. But whenever you are testing any script, let's say you are testing in production, non production, make a habit। एक हैबिट होनी चाहिए कि जैसे कि आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, सो टू प्रोसीड विथ एग्जीक्यूशन लाइक अपडेट डिलीट एनीथिंग। ओके, सो आप पहले लॉग्स को प्रिंट कर लो। व्हाट लॉग्स आर, पहले आप चेक कर लो कि वो लॉग सही है नहीं सही है। बीट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, नॉन प्रोडक्शन, आप किसी पे भी उस लेट्स से वो स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट, फिक्स स्क्रिप्ट। सो उसके पहले एक हैबिट होनी चाहिए कि आप लॉग्स हमेशा प्रिंट करो। ओके, दिस इज़ द गुड हैबिट, लॉग्स प्रिंट करना। सो ये मेरा डिसीजन टेबल का सिस आईडी है। दिस इज द सिस आईडी ऑफ डिसीजन टेबल। एंड लेट्स से सम चॉइसेस वैल्यू वी नीड टू प्रोवाइड विच इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर लिख के आ जाता है अगर हम मैंडेटरी वगैरह करते हैं तो। दिस इज आर सिलेक्ट बॉक्स। लेट मी ओपन दिस वन। Let's take one, let's say cab approval. We'll copy the value of cab approval. Let's put it here and let me print group approval value. Yeah. So this is the group approval value. Because we have given the output data type as a reference in decision table, that's why here it is like the output is in sysid format and not the name format. Okay. So let's say I want to check this sysid. You can see cab approval sysid. If you want to recheck, cross check from decision table, this is cap approval input, and yeah, accordingly out. So next we will going to create one client script, catalog client script, and we will call script include from that catalog client script. And what we will do, based on the choices, our output will be appear in the string field, this group name. What the choices we will select, our output will be appear here. So मैं क्या करता हूँ कभी भी, लेट्स से आई वांट टू राइट सम स्क्रिप्ट, मुझे कोई भी स्क्रिप्ट लिखना है एंड वो स्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्ट इंक्लूड है या फिर कोई भी सर्वर साइड का कोई भी फंक्शंस वगैरह है कोई भी, बट आई डोंट रिमेंबर द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट कभी भी रिमेंबर नहीं रखता, बट मेरी आदत है कि उसके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा क्लियर रखना। बट स्क्रिप्ट्स मैं कभी भी रिमेंबर नहीं रखता, मैं हमेशा नोट डाउन करके रख लेता हूँ अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो। स्क्रिप्ट का अगर मुझे रेफरेंस लेना होता है, लेट्स से द सिंटैक्स, स्क्रिप्ट का सिंटैक्स मुझे अगर रेफरेंस लेना होता है, मैं कभी भी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस नाउ प्रोडक्ट डॉक से ले लेता हूँ, या फिर कम्युनिटी से देख लेता हूँ, या फिर सर्विस नाउ के डेवलपर फोरम से कर लेता हूँ। सो या आज भी मैं वही करूँगा। सो ग्लाइड एजेक्स हम यूज़ करेंगे, बट आपको कॉपी पेस्ट अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट वगैरह मत करो, खुद से लिखने का ट्राई करो। सो इससे क्या होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस होगा एंड ये प्रैक्टिस आपको आगे जाके काम आएगा, एक अच्छा हैबिट बनेगा आपको। बट नेक्स्ट टाइम लेट से आप सारी स्क्रिप्ट्स याद नहीं रख सकते, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, just make sure your concepts are clear, everything's clear, but yeah, you can take reference, copy paste वगैरह उस टाइम पे कर सकते हो। कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, लेट मी क्रिएट न्यू वन, let's name it test decision by script।
type on change, variable name this. Let's select it all. That's cool. Okay, I need to remove this part, script include part. गेट XML आंसर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एज पर योर यूज केस सिंक्रोनस सिंक्रोनस व्हाट कॉल यू नीड टू मेक यू कैन गेट XML आंसर और भी सारी चीज़ें तो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हम अलर्ट की जगह पे यहाँ पर व्हाट विल डू form dot set value, let's say the name of the field, group name if I am not wrong. Let me go once again. Okay, let me check from here. Group name, जब बैकग्राउंड स्टेट में कर रहे थे तो ग्रुप सी साइड वैल्यू विल बी रिस्पॉन्स। सो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या लाएंगे, ग्रुप नेम लाएंगे। ओके, ग्रुप नेम नॉट दिस सी साइड, ग्रुप नेम को लेकर आएंगे। जब बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में कर रहे थे तो ग्रुप सी साइड आया था, बट जब स्क्रिप्ट इंक्लूड से कॉल करेंगे तो हम ग्रुप नेम लाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ फंक्शंस है ऑन लोड के, सो ये हम हटा देंगे। दिस इज ऑन लोड फंक्शन वी डोंट वांट। कुछ unnecessary comments we will remove, this we will remove, this we will, what we will do here, function should be called outside the function. Okay, so I think it's done. We are calling this, should be our name of script include, name of function, and user. We don't, we need input as backend, the underscore form dot get value. The name should be this. Yeah, done. Get value of that username, let's change it, choice backend name, name of the method which we will call from script include, the name of script include get user info, no, get group info. Yeah, now it is meaningful. Let me save. I don't see any error. Let me save. Let's create script include now. Okay, let me copy name from here, get info. But this is not the best practice. Always create script include first and then catalog client script. Okay, client callable script include जो होना चाहिए वो आपका पहले क्रिएट होना चाहिए, एंड ना कि क्लाइंट कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट पहले। देख आप वी कैन सी दैट मुझे नेम यहाँ से कॉपी करके लेके जाना पड़ रहा है वहाँ पर, मेथड का नेम प्लस स्क्रिप्ट इंक्लूड एंड वो सारी चीज़ें। ओके, लेट मी सेव। आई हैव चेंज द मेथड नेम आल्सो टू ग्रुप नेम. It's a object, so we need to put comma, and then okay, so I've copied some of the reference script, so I need to customize as for our use case. What we need, group name. Yeah, group name is done. System backend choice, go here, let's put this. We want value from user group table and not the user table. Now let me remove get because we don't need this thing username, we already have sysid. So here we'll put group sysid, name of that variable, group name. This is the backend name of that thing. Okay, my mistake. This is the backend name of, yeah, backend name of field.
from group user table. Okay, next is, I think this is done. I have created object result. This is returning the result from here. JSON non stringified, so it's in string. That's all good. But we haven't called our decision table script yet, and we want output from decision table, if I am not wrong. So what we will do, we'll copy that script which we have copied from decision table. Let me remove here. Let me add try here. Catch after return function. So we don't need this anymore. We need this at the end. Okay. Choice backend value, and then we'll put here as an input. So always it should be dynamic and not hard coded. This is our decision table sysid. When, let's say, when you, anywhere you are using sysid in your script, try to replace that sysid with some dynamic thing. Okay, let's say use that as a variable, call that from a system property, or create any script include in your organization, so that that script include should be uh, only used for to store sysids. Okay, and then you can call the script include directly your sysid values. Okay, so let's say if you want to change the sysid or some new decision table you wanted to create, so you can directly create new decision table, and then you can change that either system property or script include, and you don't need to touch the script always. Sys user group approval tables, this is our sys id of group, and then group name. This should be a group name. Okay, that's fine. What we will do here, let me add one source decision table. Yeah, that's, I think we have created everything. Now what we need to do here, we need to come again here. Let's say this is returning as a JSON, and we are directly setting this value here. Okay, so we don't need that one. Let's say first we will save a response body JSON like this. Let me directly pass it. स्ट्रिंगिफाइजेशन को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट में. ओके, एंड देन व्हाट विल डू, विल कॉल दिस जेसन, हमारे एक्चुअल वैल्यू को स्क्रिप्ट इंक्लूड से ग्रुप नेम को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, एंड लेट मी सेव दिस. यहाँ पे we can also add new value. Okay, because we have already created on change client script. Let's see if this works or not. Okay, some error is there. Let's see. Let me correct the error and get back to you again. ओके, सो मैंने वो सॉल्व कर लिया. मैंने एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं किया है यहाँ पर. जस्ट फ्यू वेरिएबल्स ने चेंज किए थे, जस्ट क्योंकि ये वेरिएबल ने मेन फंक्शन नेम सेम था जस्ट. बट वो एरर नहीं था, एरर का इशू कुछ और था. मैंने टू स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ ट्राई किया बट वो वर्क नहीं किया. तो लास्ट में मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ट्राई किया, जो कि है टाइप कास्टिंग. तो जो पैरामीटर्स आ रहे थे कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट से, तो डॉट स्ट्रिंग से तो टाइप कास्ट नहीं हुआ, बट मैंने फिर यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड किया, एंड ये मुझे मिला है कम्युनिटी से. ये कम्युनिटी आप देख सकते हो. तो इसमें और मेरे स्क्रिप्ट में बस एक ही चीज़ का अंतर था, दैट्स द स्ट्रिंग कास्टिंग मीन्स इट इज़ नॉट वाया डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, बट या कुछ और ही था. तो मैंने ऐड किया एंड यस इट इज़ वर्किंग नाउ. सो ये थोड़ा सा वियर्ड था, बट या यू कैन ट्राई दिस थिंग्स. मीन्स कभी कभी let's say if you are trying any scripts and it's a part of trouble shooting, so ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. And you can see the error. What the error was, that illegal argument invalid type class means
द इनवैलिड डेटा टाइप ऑफ दिस इनपुट। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, न्यू ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, जेसन पार्स, स्ट्रिंगिफाई, हर चीज़ें ट्राई कर दी, बस वो वर्क नहीं किया। वर्क क्या किया, सिर्फ यहाँ पे टाइप कास्टिंग वर्क किया, टू स्ट्रिंग, एंड टू स्ट्रिंग भी वर्क, टू स्ट्रिंग मेथड भी वर्क नहीं किया। ये पुराना वाला मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, इंडिया इट वर्क। सो अब आप देख सकते हो, लेट्स सी द आउटपुट। कैब अप्रूवल, चेंज मैनेजमेंट, network, problem solving, RMA approval. Okay, so you can see now it's working via script. So we have called decision table. This is the part 2. In part 1 we have called decision table from flow designer, that was working, and in part 2 we have called our decision table from script. Okay, from catalog client script with help of script include. So yeah, we will end our video here. थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूँगा टू कि वीडियोस में जल्दी जल्दी अपलोड्स करूँ थोड़ा, एंड थोड़ी न्यू चीज़ों के बारे में अपलोड्स करूँ, थोड़ी नई बातें करूँ जो कि एकदम यूनिक है। मैं कहीं से भी कंटेंट वगैरह कॉपी नहीं करूँगा, ना कम्युनिटी से, ना किसी किसी का भी सोर्स कॉपी नहीं करूँगा। वो कॉपी, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो लिंक्डइन वगैरह पे, या फिर कम्युनिटी पे आप जाके इस चीज़ें पढ़ सकते हो। बी कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, बाय बाय।